Okay, now let's talk about two or three important topics for today. Now, these maximum will be asked as a short note, and these short notes will be very important for your uh, final exams as well as for your vivas, because most of the time the MCQs are asked on the short notes because these are the neglected topics for by most of the students. So when we're talking about the cardiac disorders, let's talk about the anatomy first, and then we can go to the details about the actual pathology. So this is what we have the pericardium. Now remember, in pericardium we have three layers. One is a fibrous pericardium, which is avascular in nature, which is what is an outermost covering. It is a fibrous tissue which encloses the heart. And one is the serous pericardium. Serous, we have got two layers. One is a visceral layer, one is a parietal layer. So together they comprises about three important layers of the pericardium. It is the serous pericardium which is like the peritoneum. Remember, peritoneum also we have two layers, visceral layer and a parietal layer. Pleura also we have two layers, visceral layer and parietal layer. Visceral is the inner one, parietal is the outer one. And we have a fluid in the parietal layer called as a pericardial fluid. Now this fluid is similar fluid which is also there in the pleural space between visceral and parietal pleura. It is also the fluid that is there in the peritoneal cavity, which have visceral and parietal, we call peritoneal fluid. Wherever we have a organ, which is what is moving, we require these two layers. Lungs are moving, intestines are moving, so we can prevent the friction. It is what is the prevention of the friction, that is the function of the pericardium, pericardial fluid. Now, in certain disorders, we have got inflammation that is going on. That is what is called as the peritonitis in case of peritoneal cavity, pericarditis in case of the cardiac cavity. Now, what is important in this is what exactly will be the presentation, what exactly will be the finding, and what exactly are the causes, clinical features, investigations, and we talk about the management quickly. So we will discuss this as a short note. But important thing is to understand the anatomical concepts first. So what exactly can be the etiological factors? Most of the time it can be bacterial infections. Very commonly is a mycobacterium, or we can also have staphylococci, streptococci, Neisseria. 90% of the times this infection is coming from outside because we don't have anything that is going into the pericardial cavity directly unless it is a trauma from outside. So these infections are usually coming from a primary focus which is there outside the cardiac anatomy. So mycobacterium जिसको lung tuberculosis है उसको pericardial tuberculosis हो सकता है, किसी को स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन है, स्ट्रेप्टोकोकल निजेरिया मेनिंजाइटिस है, निजेरिया गोनोरिया है. Remember, gonorrhea is an STD which is what is can complicating as a pericarditis also in some patients. But it can also be the viruses. We also have the malignancies which are there in the mediastinum, like for example mesothelioma of the pleura. Mesothelioma is an malignancy of the pleura. We have angiosarcoma which is there in any blood vessels, rhabdomyosarcoma which is there in the skeletal muscles. तो चेस्ट के जो स्केलेटल मसल्स है उसमें अगर कोई कैंसर होता है तो दैट कैन आल्सो स्प्रेड टू द pericardium, and it usually presents like the pericardial effusion because when there is an inflammation that is going on in the pericardial space, we have the fluid that is getting collected. Remember, in the last lecture also we had talked about bottle shaped heart in which we don't have any delineation of the heart. Normally ऐसा heart रहता है. This is what is a normal heart, I can say. There is a notch here, cardiac notch जिसको बोलते हैं, cardiac notch नहीं, this is atrial and ventricle का notch जिसको बोलेंगे हम लोग. Cardiac notch is there in the lungs, left side lung में रहता है. But here we have a fluid that is getting collected, and this fluid is evenly distributed around the heart, and because of that it looks like a bottle shaped heart, or I can also say pear shaped heart. So pericardial effusion in an X-ray chest. You can also go for an MRI scan. इसमें अपने को pericardial effusion दिख सकता है. This is what can be the MRI scan or the
pericarditis, it's also called as constrictive pericarditis. Ultimately what it will lead to, ये जो heart है उसके आजू बाजू में अगर fluid जमा हो गया तो this fluid is going to compress the heart from all sides. When the heart is getting compressed from all sides, what is going to happen? The filling of the heart is going to be reduced. When the filling is reduced, ultimately it will lead to reduced cardiac output, then cardiac failure, diastolic dysfunction, and all those terminologies will be coming up in this. We have a constrictive pericarditis, calcified pericardium में जब भी chronic inflammation होता है तो ये दिख रहा है. This is what is an more white. This is constrictive pericarditis where we have the calcification can be seen because of the chronic inflammatory response going on in the pericardial cavity. And this is what can be seen in the 2D echocardiography or about the effusion. If you can see, this is what the left ventricle, left atrium, aorta, aortic wall, right ventricle, and here we have the effusion. So you see that total black around the heart because fluid looks fluid looks black in the X-ray as well as any radiological investigation. In the etiology, it can also be the connective tissue disorders, metabolic disorders like hypothyroidism, chronic renal failure, iatrogenic when because of the treatment, like for example we have percutaneous coronary intervention, that is angioplasty procedures can also lead to pericarditis. Pacemaker of the heart, कोई भी iatrogenic procedure can lead to inflammation can be going on in the pericardial space. Or I was talking about the penetrating injuries. This is the only reason when the direct implantation of the microorganisms can be there in the pericardium. Otherwise, it can come from the other infection that is elsewhere in the body. So these can be the etiologies. Etiologies are so diverse that most of the time we will not be able to manage. We will not be able to diagnose what exactly can be the etiology, but the management requires. Because the inflammation that is going on, we can give aspirin or indomethacin are useful. When the response is not satisfactory, we give steroids. Dexamethasone or prednisolone can be given. Very high dose. Prednisolone हम लोग देते हैं 1 milligram per kg per day, up to 60 milligram per day, and then we can taper off. Usually we will not give anticoagulant because this can increase the risk of bleeding. Steroids are best avoided in pericarditis following myocardial infarction because it will lead to myocardial aneurysm formation. So steroids अगर myocardial infarction के बाद अगर pericarditis हुआ है तो हम लोग avoid करेंगे. We will avoid it. In chronic pericarditis, we can also go for pericardiectomy should be considered. Chronic pericarditis में हम लोग pericardium में को remove कर देंगे. So of course it will be friction that will be going on, but to prevent the pericardial effusion, cardiac tamponade, we can go for pericardiectomy. Pericardiectomy is the removal of the pericardium, which can be considered. ये सेम चीज जो है अगर बहुत ज्यादा होती है, which can compress the heart from all sides, which will lead to a cardiac tamponade. Cardiac tamponade is a condition where you will get the myocardium which is getting compressed from all the sides because of pericardial fluid that is accumulated in the pericardial space. So commonly called a cardiac tamponade. Cardiac tamponade is a condition where the effusion is so severe, accumulation of the fluid in the pericardium is sufficient to cause serious obstruction to inflow. So this is diastolic dysfunction. This will be a diastolic dysfunction of the blood, or the ventricle के अंदर blood भरेगा नहीं, and that can lead to a lot of problems. Again ये सारे causes हो सकते हैं. Clinical features क्या मिलेगा आपको? If the pericardial tamponade or cardiac tamponade is so severe that patient will have a filling defect or filling difficulty of the ventricles, can lead to accumulation of the fluid everywhere in the body. Symptoms depends upon the rapidity of the accumulation of the fluid. कहाँ पे accumulate होगा fluid? अगर left side heart failure हुआ है तो lungs में होगा, अगर right side heart failure हुआ है तो all over body होगा. और ये fluid जो है, जब ये rapidity of the symptom है, अब ये fluid कहाँ पे जमा हो रहा है? In the pericardial space.
रैपिडिटी ऑफ द डेवलपमेंट, मतलब ये जो सिम्टम्स डेवलप होने वाला है वो कितना रैपिडली फ्लूइड जमा हो रहा है. आई वाज टॉकिंग अबाउट एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड एल्सवेयर इन द बॉडी बिकॉज ऑफ द कार्डियक टेम्पोनेट. लेकिन ये जो बता रहे हैं वो दिस इज एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन द पेरिकार्डियल स्पेस. कितना फ्लूइड जमा होना चाहिए? एज स्मॉल एज 200 ml कैन ऑल्सो प्रोड्यूस क्रिटिकल it where the fluid develops rapidly. More than 2 liters of the fluid can lead to a lot of problems. So symptoms will start from 200 ml to maximum 2 liters, which can also lead to dyspnea, chest tightness, dizziness, and the symptoms of cardiac failure. Ultimately इसमें क्या होगा? Cardiac failure can be the ultimate sequelae. So 200 ml से symptoms start होगा, 2 liters तक fluid जमा हो सकता है. Venous pressure बढ़ जाएगा, आर्टीरियल हाइपोटेंशन होगा, कार्डियक पल्सेशन ऑफन आर इम्पैल्पेबल. हार्ट रेट है ही नहीं, हार्ट बीट ही नहीं कर रहा है, पेशेंट फिर भी सर्वाइव हो रहा है. क्यों? बिकॉज हार्ट बीट कर रहा है लेकिन अपने को सोना नहीं दे रहा है बिकॉज ऑफ द फ्लूइड दैट इज एक्यूमुलेटेड इन दी pericardial space. So striking contrast to elevated venous pressure is arterial hypotension, pulsus paradoxus, in which with the respiration in inhalation के टाइम हार्ट रेट कम होता है, एक्सेलरेशन टाइम हार्ट रेट ज्यादा होता है. इसमें उल्टा होगा बिकॉज ऑफ द वीनस रिटर्न इज रिड्यूस्ड. कार्डियक पल्सेशन ऑफर इम्पैल्पेबल इज आल्सो कॉल्ड बैकस्ट्राइड. आर्टीरियल हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन क्यों हुआ? बिकॉज एओर्टा के अंदर ब्लड आए नहीं, सो ब्लड प्रेशर इज गोइंग टू ड्रॉप सिग्निफिकेंटली. पल्सस पैराडॉक्सस सिचुएशन वेयर द पल्स रेट और आई कैन से हार्ट रेट नॉर्मली अगर देखा जाए तो रिड्यूसेस ड्यूरिंग इनहेलेशन, इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सहेलेशन. इसमें उल्टा होगा, इंक्रीजेस ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड रिड्यूसेस ड्यूरिंग एक्सहेलेशन. This is because of the pressure that is getting changed in the heart because of the extreme pressure that is exerted by the pericardial fluid on the ventricles. We may also get small sign, rapid breathing, pericardial knock, and third heart sounds which can be comparatively heard. Backstride क्या बोलते हैं? अच्छा वाइवा में पूछते हैं. Hypotension because of arteries having reduced amount of blood. क्या होगा? This is what is in heart. Fluid is getting accumulated around the heart. Because of that, ventricles are not getting filled up properly. So aorta के अंदर जो blood जाएगा वो कम जाएगा. Aorta के अंदर अगर blood कम जाएगा तो we will have hypotension. Raised JVP. Raised JVP क्यों मिला? Because right ventricle जो है नहीं भर रहा है, right atrium भी नहीं भर रहा है, लेकिन बाहर से प्रेशर आ रहा है. So aorta के अंदर superior vena cava के अंदर fluid blood जमा हो जाएगा. Blood will get accumulated in the superior vena cava that will lead to raised JVP. Raised JVP because heart के externally we have pressure that is exerted on the heart because of the right atrium में pressure बढ़ जाएगा. Right atrium में pressure बढ़ा तो SVC में pressure बढ़ जाएगा. So this will be raised in increased pressure in the superior vena cava will lead to raised JVP. And absent heart sounds, muffled और एब्सेंट. जब तुम ऑस्कुलेट करोगे तुमको ऐसा लगेगा कि हार्ट बीट जो है वो बहुत धीरे से सुनाई दे रहा है बिकॉज देयर इज अ फ्लूइड दैट इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड अराउंड द हार्ट. सो दिस विल बी द सिचुएशन वेयर यू गेट कार्डियक टेम्पोनेट कैन बी डायग्नोस्ड. दिस इज एन इमरजेंसी सिचुएशन जहाँ पे हम लोग नीडल डाल के फ्लूइड को एज सुन एज पॉसिबल एस्पिरेट कर लेंगे. As soon as possible we will aspirate it. Low voltage complexes in the ECG. क्यों low voltage complexes? क्योंकि हार्ट के अराउंड जो फ्लूइड है वो इलेक्ट्रिकल करंट को बाहर आने नहीं देगा. So all the waves will be smaller. इसको बोलते हैं low voltage complexes. Low voltage complexes. So normally अपने को this is what is a PQRST complex अपने को ऐसा दिखेगा. इस सिचुएशन में PQRST complex अपने को ऐसा दिखेगा. So all the waves are smaller because ultimately the current that is getting displayed by the ventricles by the heart is less and because of that ECG probe जो है वो कम voltage दिखाएगा. Ultimate diagnosis can be made on the echocardiography
easily we can make out the pericardial tamponade. मिनिमम फ्लूइड अगर है तो 5 mm डिस्टेंस रहता है पे दोनों पेरिकार्डियल लेयर्स में, विसरल एंड पैराइटल लेयर्स में, इसको तो पेरिकार्डियल सेपरेशन 5 mm का है तो 50 to 100 ml is the amount of fluid which is there. That is also abnormal. You can say minimum fluid and maximum can also be 2 centimeters. अगर है तो 500 ml of blood collect हो सकता है. 500 ml blood can get collected. More than 500 ml. Up to 2 liters तक हो सकता है, but of course patient will not survive by the time because patient will have extremely reduced cardiac output. Patient will go into cardiac shock. क्या करेंगे इसको? इसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है. वी कैन जस्ट एस्पिरेट इट. पेरिकार्डियोसिंथेसिस जिसको बोलते हैं, must be carried out at once as soon as possible. It is life saving. और we may also, अगर ये पूरा अगर वो recurrent collect हो रहा है तो we can also insert a small catheter over the needle inserted pericardial cavity and can be left in place to allow the extra fluid that is getting out. जैसे हम लोग pleural space में catheter डालते हैं, Malikoff's catheter जिसको बोलते हैं, for draining the pleural effusion. यहाँ पे हमको पेरिकार्डियोसिंथेसिस कैथेटर डालेंगे, उसको रख सकते हैं फॉर रिकरेंट पेरिकार्डियल टेम्पोनाड. So this can be performed in case of a pericardial effusion, effusion or cardiac tamponade. Now let's come to another small topic. This doesn't look like the condition called as an heart attack. Heart attack is different. Cardiac arrest is different. Recently, you see a lot of young patients are dying because of heart problems. Even if they are not a patient of ischemic heart disease, it is the cardiac arrest. Now, cardiac arrest is different. Myocardial infarction is different. Myocardial infarction is the ischemic event, whereas cardiac arrest is an electrical event. तो दोनों डिफरेंस है. कार्डियक अरेस्ट कैन इवन अकर इन अ नॉर्मल हार्ट आल्सो. नॉर्मल हार्ट, यस, इट कैन बी प्रीडिस्पोज टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज, लेकिन ये विदाउट कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी हो सकता है. अथेरोस्क्लेरोसिस, इस्केमिक हार्ट डिजीज और एनोमलस लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी फॉर पल्मोनरी आर्टरी, कावासाकी डिजीज, मायोकार्डियल डिसऑर्डर्स, valvular heart disorders. There are a lot of other pathologies which can lead to cardiac arrest. This is the electrical problem. So we have certain electrical pathologies which can also lead to this kind of disorder, like WPW syndrome, long QTC syndrome, commonly also called as Romano-Wald syndrome, Jarvell-Lange-Nielsen syndrome. ये सारे syndrome electrical problems है, इसकी वजह से हो सकते हैं. We also have a metabolic cause, like for example hypoxia. Chronic hypoxia will not lead to cardiac arrest. It is an acute hypoxia. Chronic hypoxia में क्या होता है, body will adjust. लेकिन CO2 नार्कोसिस अगर होता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन सडनली ड्रॉप होता है, हाइपरकैपनिया, इंक्रीज इन द CO2. Sudden increase in the CO2 can lead to cardiac arrest, or even hypocalcemia, hypomagnesemia, hypokalemia, hyperkalemia. All those are the metabolic electrolyte abnormalities which can lead to cardiac arrest. Or you can also say toxins, cocaine, adrenaline, which can also lead to cardiac arrest. Cardiac arrest में सबसे पहले क्या करते हैं? Cardiac arrest is an electrical problem, so as soon as possible you will have to give the the cardioversion, that is electric shock to the heart. Of course, most of the patient will not reach to the hospital. तो ये patient में अगर cardiac arrest होता है, so and if the patient is not in the hospital, क्या करना चाहिए? Because cardiac arrest patient में, if you don't do anything within 30 seconds or even up to 2 minutes, patient is going to die. उसको immediately cardiac massage दो. Or even they also recommend to give a strong physical stimulus to the heart. जोर से हार्ट के प्रिकॉर्डियम पे फिस्ट से थर्ड दो. थर्ड मतलब
मुक्का मारो. This can work like the electrical stimulus or just like cardioversion. Cardioversion is an electric shock we give. But if the patient is not in the hospital, we can go for a physical stimulus or physical shock can be given. That can lead to cardiac impulse can become normal and immediately patient will survive. So these patients are not doesn't require anticoagulants or thrombolytic drugs or anything else. You have to diagnose it properly and then you can treat the patient. अगर patient को ये होता है ICU में तो वो immediately cardioversion देते हैं. Immediately उनका अलार्म जो है वो बजने लगेगा, ECG का अलार्म बजने लगेगा कि कुछ हुआ है and the ICU RMO will come and will give cardioversion. Cardioversion is an electrical shock that is given to the patient. If the patient is there in the ICU, the patient is there in the ICU. This is what is in cardioversion. Consider cardioversion or a DC shock is safe means of terminating the tachyarrhythmias or restoring the sinus rhythm. Just like slapping just like for example, some kid is not listening to you. So what do? समझा दिया है, सब दे दिया, लेकिन फिर भी अगर tantrum flow कर रहा है, so what we do? We slap the baby. Of course, it is not recommended every time to slap the baby, but cardioversion is just like slapping the heart. Slapping the heart may be effective for re-entrant arrhythmias, ventricular fibrillation. इसमें हम लोग cardioversion देते हैं. So these are the indications of DC shock, atrial fibrillation. इसकी वजह से patient का cardiac output is getting reduced. The most common indication for cardioversion is atrial fibrillation. 100 joules of shock usually will be required. Most common condition is atrial fibrillation. The other common condition is atrial flutter, re-entrant SVT, supraventricular tachycardia, ventricular tachycardia, VT. All of these can be diagnosed on an ECG. Ventricular tachycardia, ECG will be like this, or ventricular fibrillation, ECG will be like this. You must have seen in the movies also. वो monitor पे दिखाते हैं, straight line आ गया, आपको straight line is patient का, there is no heartbeat. लेकिन ventricular fibrillation में ECG will be like this. And when you give ventricular fibrillation में, you can give DC cardioversion. Immediately, the impulse is going to come to normal if the patient survives. There are certain contraindications to cardioversion: digitalis toxicity, short-lived tachycardias, multifocal atrial tachycardias. इसमें काम नहीं करेगा. It is not going to work. Now let's come to another important topic, which is a cardiopulmonary resuscitation. Now, in any condition, if you want to give a resuscitation, which is called a cardiopulmonary resuscitation, इसमें cardiac को भी impulse देते हैं, pulmonary को भी impulse देते हैं, because ultimately only cardiac output is of no use if respiration is not there. Only respiration is also of no use if the cardiac output is not there, because respiration अगर हो रहा है मतलब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन्स तक पहुंचने के लिए कार्डियक आउटपुट तो लगेगा. एंड ओनली कार्डियक आउटपुट है मतलब ब्लड सर्कुलेट हो रहा है लेकिन पेशेंट का रेस्पिरेशन ही नहीं है, तो वो ऑक्सीजनेट होगा ही नहीं ब्लड. तो बोथ ऑफ देम कैन लीड टू प्रॉब्लम. इसीलिए टर्मिनोलॉजी आया, उसको बोलते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन. कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन. इसमें कोई भी क्रिटिकल पेशेंट में सबसे पहले एबीसी प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं. इसको बोलते हैं एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन. सबसे पहले एयरवे को रीअश्योर करो, देन ब्रीदिंग, देन सर्कुलेशन. एयरवे मतलब क्या करेंगे हम लोग, पेशेंट को का नेक एक्सटेंड करेंगे तो एयरवे खुल सकता है. ब्रीदिंग में हम लोग पेशेंट को अम्बू बैग रेस्पिरेशन देंगे विद द हेल्प ऑफ एन अम्बू बैग अबाउट 30 to 40 पर मिनट अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा हाइपोक्सिक है तो. एंड सर्कुलेशन के लिए हम लोग कार्डियक मसाज देंगे at the rate of 100 to 120 per minute. You must have seen somebody is giving ambu bag
3 बार कार्डियक थर्ड देने के बाद एक अम्बू बैग देते हैं. 1 2 3 अम्बू बैग. 1 2 3 1 2 3 इज cardiac massage, and then ambu bag. 1 2 3 and ambu bag. So these are the criteria for giving the cardiopulmonary resuscitation. अगर अम्बू बैग नहीं है तो माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन भी दे सकते हैं. द पेशेंट इज नॉट इन द हॉस्पिटल. When one encounters an unconscious patient, क्या करना चाहिए? What are the things which we are supposed to follow? Unconscious patient अगर आया तो पहले रेस्पॉन्सिवनेस पेशेंट का है कि नहीं वो पता करो बाय शेकिंग द पेशेंट. Gently shaking the patient. Do not shake the head or neck. क्यों? क्योंकि अगर ट्रॉमा है तो वो फ्रैक्चर जो है वो डिसलोकेट हो जाएगा. लेट्स से रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, तुमको रोड पे कोई पेशेंट मिला जिसको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकता है, पेशेंट इज नॉन रेस्पॉन्सिव. पहले उसको जेंटली शेक करके मुंह पे पानी मार के पता कर सकते हैं कि पेशेंट रेस्पॉन्सिव है कि नहीं है. डू नॉट शेक द हेड और नेक, क्योंकि वहां पे अगर फ्रैक्चर है तो वो डिसलोकेट होके ब्रेन स्टेम को इंजरी हो सकता है. पोजिशन ऑफ द पेशेंट ऑन अ फर्म और फ्लैट सरफेस, क्योंकि जब तुम कार्डियक मसाज दोगे तो ऊपर से प्रेशर डालोगे चेस्ट पे, तो अगर पेशेंट फर्म सरफेस पे नहीं है तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं गिरेगा. इट विल नॉट इम्पैक्ट दैट मच. देन व्हाट यू नीड टू चेक इज एन एयरवे पेटेंसी इन प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेशन. अगर पेशेंट का रेस्पिरेशन है कि नहीं है. प्लेस द palm of one hand in the patient's forehead and apply firm pressure to tilt the head backwards. Head backward क्यों करेंगे? So that the airway passage will be open. Airway passage will be open. At the same time, place the index and middle fingers of the other hand on the chin and displace the mandible anteriorly. इससे क्या होता है? टंग फॉल जो है वो नहीं होता. डिस्प्लेस द मैंडिबल अंटीरियरली. मैंडिबल को अंटीरियरली अगर डिस्प्लेस करते हैं तो टंग फॉल अगर हुआ है तो रेस्पिरेटरी पैसेज खुल जाता है. सो एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट इन दिस. पेशेंट का फोरहेड पीछे करो, नेक को एक्सटेंड करो, मैंडिबल को आगे करो. प्लेस द इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर्स ऑफ द अदर हैंड अंडर द चिन एंड डिस्प्लेस द मैंडिबल अंटीरियरली. दिस विल रेज द टंग अवे फ्रॉम द पोस्टीरियर फेरेंक्स. अगर टंग फॉल हुआ है उसकी वजह से अगर रेस्पिरेशन ब्लॉक हो गया तो ये उसको प्रिवेंट करेगा. सो दीज आर द पॉइंट्स वी आर सपोज टू डू फॉर ओपनिंग द एयरवे. ओपनिंग द एयरवे. लेट्स सी इफ आई हैव अ डायग्राम फॉर दिस. नहीं डायग्राम है तो चलो ठीक. सो वी आर एट द airway point where we have pushed the patient's forehead backwards and displaced the mandible anteriorly. इससे रेस्पिरेटरी पैसेज खुल जाएगा. अगर नेक इंजुरी सस्पेक्ट है नेक tilt should be avoided. And modified jaw thrust, that is by grasping the angles of the mandible with the fingers, both hands, and moving the mandible anteriorly. एंगल ऑफ द मैंडिबल से पेशेंट का मैंडिबल अंटीरियरली पुश करो. मॉडिफाइड जॉ थ्रस्ट जिसको बोलते हैं, मॉडिफाइड जॉ थ्रस्ट. इससे क्या होगा? मैंडिबल आगे आएगा. मैंडिबल अगर आएगा तो टंग आगे आएगा. टंग अगर आगे आएगा तो रेस्पिरेटरी पैसेज खुल जाएगा. Then you start the assisted ventilation, that is mouth to mouth respiration or an ambu bag respiration when the patient is no spontaneous respiration is there. Gently pinch the nose close with an index finger and thumb and keep hand kept on the forehead. Make a tight seal over the patient's mouth and ventilate twice with slow full breaths. नाक बंद, अदरवाइज तुम जो माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दोगे वो नाक से बाहर आ जाएगा. So close the nose and then give 2 full mouth to mouth respiration, 1 to 1.5 seconds each. 2-second pause should be interspersed between the breaths. 2 breaths के बीच में 2 seconds का pause देना चाहिए. So airway हमने clear कर दिया by positioning the patient. Then हमने breathing start किया, assisted ventilation. ये कभी करेंगे अगर spontaneous breathing नहीं है. पेशेंट का नाक बंद किया, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन और अम्बू बैग रेस्पिरेशन हमने दिया. व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ एडिक्वेट वेंटिलेशन? राइज एंड फॉल ऑफ द चेस्ट इज डिटेक्टेड.
When you give mouth-to-mouth respiration, the rise and fall of the chest should be seen. ये सिचुएशन में तुम्हारा असिस्टेंट जो है वो पैल्पेट द कैरोटिड पल्स करेगा फॉर एटलीस्ट 5 सेकेंड्स. तो हमने एयरवे क्लियर कर लिया, ब्रीदिंग क्लियर कर लिया, अभी सर्कुलेशन को क्लियर करना है. एयरवे क्लियर कर लिया बाय पोजिशनिंग. ब्रीदिंग हमने माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन या तो अम्बू बैग से हमने रेस्पिरेशन दिया. देन कैरोटिड पल्स पैल्पेट करो फॉर एटलीस्ट 5 सेकेंड्स. इफ द कैरोटिड पल्स इज पैल्पेबल, मतलब क्या, हार्ट बीट हो रहा है, तो कार्डियक मसाज देने की जरूरत नहीं है. वी हैव गॉन स्टेप बाय स्टेप. पहले एयरवे, फिर ब्रीदिंग, फिर सर्कुलेशन. पोजिशनिंग द पेशेंट प्रॉपर्ली, ब्रीदिंग, असिस्टेड ब्रीदिंग, एंड देन पाल्पेट द कैरोटिड पल्स. अगर पैल्पेबल है तो कार्डियक मसाज देने की जरूरत नहीं है. असिस्टेड वेंटिलेशन शुड बी कंटिन्यूड एट द रेट ऑफ 12 ब्रेथ्स पर मिनट. अब कैरोटिड नॉट पैल्पेबल है, मतलब हार्ट भी बीट नहीं कर रहा है, then you need to give a cardiac resuscitation. Cardiac resuscitation started by placing the patient's form on the firm surface. Initial blow to the chest over the sternum is delivered. Chest compressions are performed by placing the heel of one hand on the back of the other, placing it 1 inch above the xiphoid process of the sternum. क्योंकि वहां पे लेफ्ट वेंट्रिकल रहता है. heel of the hand मतलब base of the metacarpals. One hand over the other. Position कहाँ पे? 1 inch above the xiphoid process. क्योंकि वहाँ पे left ventricle. Because most important thing what we want to have is the ventricles which need to compress. 1 inch above the xiphoid process of the sternum, with shoulders directly above the hands and the elbows in a locked position. तुम्हारा प्रेशर जो है वो शोल्डर से आना चाहिए, ना कि हाथ से. Shoulders need to be directly above the hands. तुम्हारे जो heel of the hand है उसके exactly होगा. हाथ पूरी तरह extended चाहिए. Hand need to be properly, fully extended. The heel of the hand, sternum is compressed 3 to 5 centimeters. ज़्यादा जोर से भी नहीं, otherwise rib को fracture कर दोगे तुम. Sternum should be compressed 3 to 5 centimeters. Thrust being applied straight down towards the spine, perpendicular to the chest wall. This is what is the procedure. गूगल पे तुमको बहुत सारे इमेजेस भी मिल जाएंगे. कार्डियक रिसस्टेशन हम लोग तभी करेंगे अगर पेशेंट का कैरोटिड पल्स नहीं है. The patient doesn't have a carotid pulse, then we can go for cardiac resuscitation. So पहले हमने एयरवे कर लिया, फिर ब्रीदिंग कर लिया, फिर सर्कुलेशन किया. Now this requires to be continued. Basic life support should be stopped for 5 seconds at the end of first minute. क्यों? हो सकता है कि पेशेंट का स्पॉन्टेनियस हार्ट रेट एंड ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाए. सो बेसिक लाइफ सपोर्ट शुड बी स्टॉप्ड फॉर 5 seconds at the end of first minute, every 2 to 3 minutes thereafter to determine if the patient has resumed the spontaneous breathing. तो तुम करते ही रहोगे. कुछ सेकंड के लिए स्टॉप करके देखो अगर पेशेंट का स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग, स्पॉन्टेनियस हार्ट रेट स्टार्ट हुआ कि नहीं. तो लुक फॉर स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग. अगर हो रहा है, कैरोटिड पल्स फील हो रहा है, अगर हो रहा है तो यू कैन डिसकंटिन्यू. अगर नहीं है यू कंटिन्यू टिल द पेशेंट रीचेस टू द हॉस्पिटल. Till the patient reaches to the hospital. Should be continued for minimum of 30 minutes. However, the pupils become dilated and fixed, patient doesn't regain consciousness, that means patient is already dead. Then you can stop. In a way, this is doing what? This is doing the work of ventilator and a cardiac massage. Ventilator तो भले सिर्फ respiration का काम करेगा, लेकिन you are also giving cardiac massage. जिसको heart rate है, रेस्पिरेशन सिर्फ नहीं है, तो सिर्फ रेस्पिरेटरी रिसस्टेशन देना पड़ेगा. अगर पेशेंट को हार्ट रेट भी नहीं है तो पेशेंट को सीपीआर देना पड़ेगा, कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टेशन देना पड़ेगा. अगर 30 मिनट तक पेशेंट को हम लोग दे रहे हैं और फिर भी अगर पेशेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, देन यू कैन से पेशेंट इज डेड और एनी एंड ऑर्गन फेलियर कैन बी देयर. सो दीज आर द स्टेप्स. These are the steps. अगर एंड ऑर्गन फेलियर, मल्टी सिस्टम फेलियर may not be done, either need not be done if the patient has got end organ failure. अगर पेशेंट एंड ऑर्गन फेलियर है, हार्ट काम ही नहीं कर रहा है, लंग्स काम ही नहीं कर रहे हैं,
तो देख के कोई मतलब नहीं है, बिकॉज दिस इज जस्ट अ टेम्पररी maneuvers to help the patient regain spontaneous breathing or spontaneous circulation. 30 minutes. Resuscitation should be continued for minimum 30 minutes. और some end organ failure अगर है तो फिर आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है. Patient can be declared dead. So these are the important steps. In summary हमने क्या किया? सबसे पहले एयरवे ठीक किया, then breathing ठीक किया, then circulation किया, then circulation. चलो ठीक है, यहाँ पे अपना कार्डियोलॉजी स्टाफ खत्म होता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सर्जरी का कोई टॉपिक शुरू करते हैं.